over the chart of the distribution fellowship to the UGC considering the experience the UGC holds to terms of higher education institutions, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी जो ओबीसी का विद्यार्थी है उसको एमपीएल और पीएचडी का पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए फर्स्ट टाइम भारत में किसी प्रधानमंत्री ने सिद्धांत लिया है जो एमपीएल और पीएचडी का जो फेलोशिप है उसके लिए 2014-15 में उनका फेलोशिप का व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फर्स्ट टाइम ओबीसी के लिए किया गया है। उन्होंने जो क्वेश्चन किया है जो उसके लिए लेट होता है ऐसा नहीं है। हम लोगों ने यूजीसी का जो स्लॉट है उसके अंदर से 1000 का हमारी स्लॉट है, उसके अलावा भी यूजीसी का 4000 का अलग से स्लॉट है। उसमें हम इस साल भी उन्होंने बतलाया यहाँ पे 57 करोड़ रुपया हम लोगों ने उसके लिए अलॉटमेंट किया है। अभी तक जो आवंटित राशि है 50 करोड़ का 51 करोड़ राशि आवंटित हो गया है। ऐसा कोई लेट नहीं होता। हम लोगों ने वहाँ से यूजीसी के माध्यम से जो हमारी नेशनल बैकवर्ड क्लास फिनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी है, सीएनए भी है, 3 दिन के भीतर उस पैसा को, उस फंड को रिलीज करने का व्यवस्था हमारे विभाग से है। उसका लेट नहीं होता, समयबद्ध तरीके से हमको उसका संपूर्ण करते हैं। और उसके अलावा उसका जो फेलोशिप 2014-15 में हमारी जो जेआरएफ के लिए 31,000 था, उसको हम लोगों ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 37,000 किया है और जिसको 35,000 का 42,000 किया है और समयबद्ध तरीके से उसका ऑन टाइम हम करते हैं। जैसे इस साल का आपने बताया 57 करोड़ था, अभी तक हम लोगों ने 51 करोड़ उसको डिस्बर्स हो गया। Different fellowship amount is very meager, so the students are facing serious problem for getting meager amount of the scholarship and stipend. So I would like to ask Honorable Minister through you, sir, whether the government should consider to enhance the amount of stipend and fellowship for the OBC students, and also, sir, whether the government further consider establishing fellowship for economically weaker section of the general category students. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी बता दिया 2014-15 से एमपीएल और पीएचडी के लिए जो फेलोशिप का शुरुआत किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो 31,000 था उसको हम लोगों ने इस 2023 में उसको 22-23 में उसको 37,000 किया है। जो 35,000 था उसको 42,000 किया है। समय समय में उसको वृद्धि होता है। टीआर बालू जी। Sir, the number of OBC faculties in respect of technical and scientific universities, as far as OBCs are concerned, especially in the case of assistant professor, associate professors and professors, is very meager. It is not even 10%, sir, as of now. Sir, 30 years ago, we have enacted brought an act to introduce 27% reservation. But so far, only 10% we have provided so far. So equally, everybody is responsible. But you say, I want to know what is the reason for that. The reason is because of shortage of PhD degree holders. So for want of PhD, the shortage is still existing. I want to know, to supplement Mr. Suresh's question, I want to know whether the stipend to the particular to the candidates will be increased according to the latest the economic data. Honorable. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डाटा पहले भी बता दिया कितना उसका इंक्रीज किया है, फिर भी मैं बताती हूँ जो उन्होंने क्वेश्चन किया है जो फैकल्टी के बारे में वो उसके संबंधित नहीं है। लेकिन पिछले हमारी 9 सालों में जितने लोगों को वहाँ पे हम लोगों ने किया है 8,251 to 8,251 लोगों ने उसके फेलोशिप पे वहाँ पे मिला है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया है उसके रिलेटेड नहीं है, वो फेलोशिप का रिलेटेड है। फेलोशिप को हम लोगों ने 2014 से 2023 तक उसका वृद्धि किया है। श्री हेमंत गोडसे।
सन 2019 में सरकार ने ओबीसी के अलावा 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने की निर्मित की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस के स्कॉलर्स को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में एमफिल्स और पीएचडी के स्कॉलरशिप की सुविधाएं क्या मिल रही है? अगर मिल रही है तो अब तक कितने स्कॉलर्स को ये सुविधा मिली है? अगर नहीं मिली है तो क्या सरकार इसके ईडब्ल्यूएस के स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप देने के लिए सोच रही है? थैंक यू। ईबीसी का क्वेश्चन नहीं था, उसका वो फेलोशिप ओबीसी का है। तो माननीय सदस्य महोदय को मैं उसका तथ्य उपलब्ध करके उनको भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 23 श्री श्याम सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन माननीय ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभापटल पर रखा हुआ है। माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 23 बोलो। 23। अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे। एक मिनट बैठ जाइए। अब माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभापटल पर। अब माननीय सदस्य। मैं सभी माननीय सांसदों की तरफ से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रश्न पूछो, दरखास्त बाद में, अभी प्रश्न केवल। ये रिलेवेंट सवाल है। जो हम लोगों का क्वेश्चन अपलोड किया जाता है 10 बजे, जिस दिन 11 बजे, वो विषय मुझे एक दिन पहले हो, वो विषय आप चेंबर में बताना या नहीं, आप प्रश्न पूछे यहाँ पे। तो दूसरा ये कहना था कि शायद आप मुझे बधाई दें कि 4.5 साल में पहली बार स्टार क्वेश्चन आया है। तो पूछे आप। और जैसे लोगों को ईवीएम पर संदेश हो है, उसी तरह से ऐसे बात नहीं बोलते माननीय सदस्य। अच्छा, नो, इसको रिकॉर्ड मत लेना, कभी बोलना ही मत। तो एक मिनट बैठिए, बैठिए, सवाल पूछ रहा हूं। बैठिए माननीय सदस्य। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, कभी इस पर सवाल नहीं उठे। इस तरीके के विषयों को सदन में नहीं उठाना चाहिए। आपका सदन है माननीय। मैं माननीय अध्यक्ष जी से के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बड़ी मुश्किल से तो हम लोग एक दूसरे से तारतम्य बैठा करके ये सड़कें स्वीकृत करवाते हैं, लेकिन हमारे जौनपुर के एक मंत्री जी हैं, विधायक लोग हैं, वो जा करके इसका उद्घाटन पहले ही कर देते हैं, जबकि एक शासनादेश है माननीय मंत्री जी जिसमें यह है कि इन सड़कों का उद्घाटन निर्विवाद रूप से माननीय सांसद करेंगे। तो क्या मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे विद्वान मंत्री जिसको कानून नियम का ज्ञान नहीं है, माननीय मंत्री जी अनुरोध करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से कि उनको नियम कानून का पाठ पढ़ाएं और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो कि वे जाकर खुद सड़क का उद्घाटन कर देते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। आपका प्रश्न, बस यही प्रश्न है। ओके, क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन दूसरा है। इसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए गाइडलाइन जारी है और उस गाइडलाइन की पालना सब करते हैं। ठीक है। श्रीमती के कनिमोजी, चलिए बैठिए। Thank you, sir. Since this question is related to rural unemployment, I just like to ask, given the fact that the average number of days of employment provided per household in the NREGA scheme is less than 50 days, what are the measures that the government is taking to ensure that 100 days of employment are being, because the entire scheme was intended to give minimum 100 days of employment, and we are not even able to reach 50 days. What is the government, doing to ensure that at least 100 days
of employment is given, and the money, the payment and wages are given to the people in different states who are working in this Narega scheme are getting their payment on time, because it's been delayed by a few months in most of the states. And is the government planning to give them delay allowance? Because that is also part of the scheme, that if the payments are delayed, that they are expected to give delay allowance. So what is the government responding to this? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित बेरोजगारी भत्ता से और वहाँ मनरेगा में काम करने वाले लोगों से संबंधित है। माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न पूछा, उनको हम पहुँचा देंगे। उत्तर प्रदेश के लिए ही पूछा है, उत्तर प्रदेश के लिए पूछा। श्री शशि थरूर जी। Thank you, sir. Actually, I will have the same problem with the minister, because Mr. Speaker, sir, the question is headlined unemployment allowance. So that's what we're asking about. The specific question may have been about UP, but we can ask about the principle, sir, because according to section 7.1 of the Manrega rules, if an applicant for employment under the scheme is not provided such employment within 15 days of receipt of his application seeking employment, or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the section, quote unquote, sir. I want to ask the Honourable Minister, I can tell you from my experience in the state of Kerala, this is not being done, sir. And to the best of my knowledge, in many states, we are not finding the government actually compensating Manrega applicants. In my own state, the number of applicants is more than twice the number of jobs offered. Only a handful of people are getting the full 100 days, sir. So if the government has a rule like this, that means that if somebody doesn't get the requested employment within 100 days of Manrega, they should be paid unemployment allowance. Now, where is the government doing this? I would like the Honourable Minister to explain. UP and every other state, but certainly in my state of Kerala, this is a genuine problem for our rural workers. And in Kerala, sir, 92% of Manrega workers are women, because they're running women-run households. We really need to ensure that this protection is given, sir. And given this, can you tell us what mechanisms you have in place to ensure that the states are paying the money they're supposed to pay? Is the central government giving the states the money to enable them to pay it? Thank you, sir. महोदय, एक तो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन विद्वान मित्र जिस ढंग से प्रश्न को उठाए हैं, मैं एक मिनट आपके सामने देश का चित्र रखना चाहता हूं। अगर 2014 तक जिस पार्टी से जुड़े हैं, केवल 1660 श्रम दिवस ही बन पाया था। अभी 2700 श्रम दिवस बन चुके हैं। और जहां तक पैसे का सवाल है, अरे मैं वही बता रहा हूं, चिल्लाने से नहीं होगा, ये चिल्लाने से नहीं होगा। हमें भी चिल्लाने आता है, हम ज्यादा चिल्लाना जानते हैं। चिल्लाने से नहीं होगा। ये 2,13,000 खर्च किए और 6,74,000 हमने खर्च किया। लेबर बजट राज्य सरकार लेकर के आती है, लेबर बजट की स्वीकृति हम करते हैं। और ये काम देना, मैं तो कहता हूं कि जो अधिकारी काम नहीं दे रहे हैं, राज्य सरकार उनके ऊपर पूछे। भारत सरकार की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, न पैसे की दिक्कत है, न लेबर की दिक्कत। बजट बढ़ाइए सर, पैसे दे दीजिए उनको। 24 डॉक्टर पोन गौतम सिंगामनी। Question number 24. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। Sir, my first supplement is, in the reply by the Honourable Minister, it has been stated that most of works which are pending under the said program in certain states or in hilly states, sir. The very purpose of PMGSY is to make road connectivity in rural as well as in hill terrain areas. Kalvaran Hills and Yerkad Hills fall in my Kallakurchi parliamentary constituency, which needs better road connectivity. My question is, what are the steps the government proposed to take
to remove the bottlenecks to complete the road projects in those states where the work is still pending despite many extensions. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूँ। उसके पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू करने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना एक गांव जो अलग थे उनको जोड़ने के लिए था। ये बात सही है कि जहाँ पहाड़ी एरिया है वहाँ सड़क बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, पानी बरसता है। फिर भी मैदानी क्षेत्रों में सड़कों की बहुत तेज गति से काम हुआ है, 1 और 2, 3, और उसमें भी राज्यों को हमने समय बढ़ाया है। जहां 19 तक था उसके बाद हमने 22 तक किया और 22 के बाद 2 के लिए हमने 24 तक कर दिया है, 3 के लिए 25 तक कर दिया है। ये सड़कों का काम राज्यों को करके पूरा करना है। Honorable member. Specific question. Sir, I would like to note that there is a difference in allocating funds for districts in Tamil Nadu and rural areas, sir. So I would like to know from the Honourable Minister whether the government is considering to sanction further road projects and sanction funds equally for all districts in Tamil Nadu. Madam, where will the aircard road be built? You please answer that. माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क एक सतत प्रक्रिया है जिसकी जब पूरी होती है उसको निधि जारी की जाती है। 1, 2 और इस टाइम 3 का काम चल रहा है, लेकिन कई राज्य अभी 1 और 2 को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए जिन राज्यों से सदस्य आते हैं अपने राज्यों को प्रेरित करें कि पहले 1 और 2 को पूरा करें। पैसे की कमी नहीं है, पैसा हमारा पूरा जा रहा है, लेकिन अभी पूरी 2 और 1 की सड़क नहीं बन पाई। हम 3 में पहुंच चुके हैं। मैं बधाई देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पहली सरकार है प्रदेश केंद्र में, देश में जो सड़कों का काम पूरा किया है। राम कृपाल यादव। सर, आभार व्यक्त करते हैं सर आपका कि आपने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए मुझे अनुमति प्रदान की है। सर, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पूरे अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय नहीं है, उनको आदर। उन्होंने एक कंसेप्ट के साथ प्रारंभ किया और पूरे देश में गांव को सड़कों से जोड़ने का एक नया उदाहरण पेश करने का काम किया है। और वर्तमान मोदी जी की सरकार ने इस पर बहुत बड़ी गति देने का काम किया है। मैं सर आपके माध्यम से अपने राज्य बिहार के संदर्भ में जानना चाहूँगा कि जैसा कि पता है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बिहार में फेज 1, फेज 2 की जो सड़कों के लिए आपने लक्ष्य निर्धारित किया था वो पूरा हुआ कि नहीं, और फेज 3 में आपने कितना किलोमीटर सड़क के निर्माण की अनुमति प्रदान की है, अब तक उसकी क्या प्रगति है, ये हम जानना चाहेंगे खासतौर पर बिहार के संदर्भ में सर। थैंक यू। महोदय, माननीय सदस्य ने बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है, वैसे तो ये नहीं था। फेज 1, फेज 2 में वो सड़कें बची है जो उग्रवादी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। फेज 3 में 6162 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया, जो अभी तक केवल स्वीकृत तो हो गई है, वो 5605 किलोमीटर, और स्वीकृत किए जाने बाकी हैं अभी केवल 267 फेज 3 में। श्री के मुरलीधरन। PMGSY road is the direction from the central government. The width will be 8 meter. But in the state of Kerala, most of the roads are only 6 meter. So I request the Honorable
I request the government that should adopt a state-specific rule for this purpose. Then only we can, especially the state of Kerala, will be get benefit because we want an exemption or a state-specific rule. माननीय अध्यक्ष महोदय, केरल से संबंधित प्रश्न पूछा है, उनका उत्तर मैं जरूर लिखित में भेजूंगी, लेकिन जो अभी तक पूर्ण सड़कें हुई हैं उनको 2006 से मार्च 2014 तक 411 किलोमीटर, अप्रैल 2014 से अब तक 8000 ये लंबित सड़कें पूरी की गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सतत प्रक्रिया है प्रधानमंत्री सड़क योजना। किसी भी राज्य में कहीं कमी है उसको पूरा करने के लिए हम बिल्कुल, हमारा मंत्रालय खुला दरबार है। 1, 2 और 3 जब तक ये तीनों फेज की पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आगे का कार्रवाई नहीं कर सकते। सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप नहीं, आपने लिखाया है। सर मेरा 23rd का थे, भाई पूछे। मेरा 24 मैंने दिया। तो मैं थोड़ा सर गिरिराज सिंह जी का देखने से मेरा प्रश्न आ जाते हैं। नमस्कार। तो आपको ये पूछना बार बार बोलते हैं, आपसे हम लोगों ने मिला था, आप लोगों ने भी जवाब दिया था कि मंत्री को भेजो, मंत्री को साथ बात करें। हम लोग गए थे आपको मिलने के लिए, आप नहीं थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का घर पे गए थे और वहाँ आधा घंटा इंतजार किया। सर आपका कल विषय आ गया था। सर प्रश्न है ये आ गया था कि 100 डेज वर्कर्स चाहे आवास योजना, ये सबको लिए आप लोग करप्शन ये सब बात उठाते हैं। सर ये बंगाल तो एक बड़ा स्टेट है, 38,000 गांव है। जो गांव में ये अभियोग आया वहां से पेमेंट स्टॉप करिए ना। पूरा स्टेट को क्यों रोक देते हैं रुपया देने से? 2 साल से रुपया नहीं देता, ये बहुत बड़े दुख की बात है। सर आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। सर गिरिराज जी, माननीय अध्यक्ष जी आपसे सुनना चाहते हैं, प्लीज। सवाल से संबंधित प्रश्न नहीं, मैं दे रही जवाब। मैं यद्यपि इस सदन का सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरे को झूठा आरोप लगाया गया, इन्होंने आधा घंटे का समय मांगा था 5 लोगों का। मैंने कहा 5 लोग आ जाइए। 5 लोग के बाद 10 मिनट के बाद कहते हम 10 लोग आएंगे। हमने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर बोले जनता से मिलिए। मैंने कहा आपका जो प्रतिनिधि मंडल आया है जिस इशू को लेकर के, उसके पहले टेबल में बात करिए। सुनिए पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, 2.5 घंटा मैं अपने ऑफिस में बैठी रही जहाँ मुझे आधा घंटा बैठना था। फिर बोले हम पूरे सांसद आएंगे। हमने कहा पूरे सांसद आ जाइए, अकेले नहीं मिलूंगी। महुआ में उतरा, उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं, आज आपका डेलीगेट आया, डेलीगेट से मिलूंगी। जिस इशू को लेकर के उस संबंध में बात करिए। लेकिन अध्यक्ष जी मुझे खेद है, ये मिलने के लिए तैयार नहीं थे, इन्हें प्रोपोगंडा करना था, मेरे ऑफिस में धरना देना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2.5 घंटा बैठी रही, 2.5 घंटा रात में 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे उठी हूँ और मेरे को बोला पीछे गेट से निकल गई। अध्यक्ष महोदय, मैं 4 नंबर गेट से जाती हूँ, 4 नंबर से ही आती हूँ और 4 नंबर से गई हूँ। इन्हें मांगना नहीं था, इन्हें पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसी भवन में आकर के धरना दिया। मैं 2.5 घंटा बैठी रही। मैं उसके लिए इनसे चाहूंगी इस तरह का झूठा बयान नहीं करें। मुझे झूठा बोला, मुझे महुआ मित्रा ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति जैसा पापी हो तो पाप की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संत हूँ और उसका परिणाम इनको मिल गया। श्री तापिर गांव जी, श्री तापिर गांव जी, आप पूछिए। तापिर गांव। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से 2 बार मिला हूँ
हमारा अरुणाचल प्रदेश में 3 जिला है जहां उग्रवादियों का डिस्टर्बेंस है। PMJSY फेज 1 फेज 2 का लेफ्ट आउट हुआ। मंत्री जी ने कहा कि मैंने परमिशन दे दिया है, लेकिन परमिशन तो दिया है लेकिन पान तो नहीं दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे फेज 1 और फेज 2 का लेफ्ट आउट PMJSY को कैसे बनाएंगे? मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूं। और पान कैसे रिलीज करेंगे फेज 1 फेज 2 का, ये मंत्री जी से जवाब चाहता हूं। ये सदस्य आप इनका माननीय मंत्री जी इनका जवाब दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य में मेरे पास आए और मैंने इनके कहने पर समय अवधि दिया हूं, बढ़ाया हूं। राज्य सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि वो पूरा कर दे। क्वेश्चन नंबर 25 अब ये बोलो मनोज राजौरिया जी। क्वेश्चन नंबर 25 माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। धन्यवाद स्पीकर महोदय। जिस तरीके से आप प्रश्न पूछिए माननीय। धन्यवाद स्पीकर महोदय। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए, किसानों की उन्नति के लिए पिछले लंबे समय से काम किया, उसी अवधि के उसी कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। और आज उस घोषणा से मेरे संसदीय क्षेत्र करौली के 1,46,953 और धौलपुर के 1,52,271 किसानों सहित राजस्थान के 80 लाख से अधिक और पूरे देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा मिला है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में ही माननीय मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के हित के लिए ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो की है, इसमें बचे हुए किसानों को या 100% किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ऐसे क्या प्रयास कर रही है कि 100% किसानों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच सके। माननीय अध्यक्ष जी, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान योजना शुरू की थी। तब से अभी तक 15 किस्तों में हम 11 लाख किसानों के लिए 11 करोड़ किसानों के लिए 2.81 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के तहत हम पहुंचाए सर। अभी ये योजना विश्व का अत्यंत बड़ा योजना है। डीबीटी के तहत योजना जारी की है। इसे विदेश में भी इसका तारीफ हो रही है सर। हम ये योजना देने के समय राज्य सरकार से आंकड़ा मांगे थे। उसी समय हमको 11 करोड़ आंकड़ा मिला था। उसके बाद इसी में 2 करोड़ किसानों फर्जी निकले। उसके बाद हम किसानों में जागृति की है, मोबाइल ऐप बनाए हैं एंड वेबसाइट में खुद वो एप्लीकेशन डालने के लिए मौका दिया है। अभी हम ई-केवाईसी के तहत फेस आइडेंटिफिकेशन करने का भी एक प्रावधान इसी में किया है। इसीलिए हमारा सरकार का इच्छा है किसान सम्मान योजना को सैचुरेशन पॉइंट में लाना, सब किसान को वो देना। ऐसे करके हम अभी हमारे काम शुरू किए हैं सर। इसीलिए ये बड़ा योजना विदेश में भी इसका तारीफ हो रहा है सर। सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में किसानों को आर्थिक संबल और उन्नति करने के लिए उनकी फसल को समर्थन मूल्य देने के लिए
एमएसपी का जो मूल्य बढ़ाया, किसानों को अधिकतम फसलों पर एमएसपी दी और अधिक से अधिक फसलों की खरीद की घोषणा की। कुछ फसलें ऐसी भी रही जिसमें प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी को 1.5 गुना से भी अधिक मूल्य पर उनकी फसलों की खरीद की। मैं आपसे माननीय मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि पिछले 9 वर्षों में कुछ किन किन फसलों को 1.5 गुना से अधिक एमएसपी पर उन्होंने खरीदने का काम किया और 9 वर्षों में कितनी फसलों की उन्होंने किसानों से खरीद की और किसानों को लाभ दिया और उनका आर्थिक उन्नति में, उनके सम्मान को बढ़ाने में सहयोग किया। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को उनके उत्पाद में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर 22 मैंडेटेड कृषि फसलों के लिए एमएसपी दे रही है सर। हमारे सरकार 2018-19 में बजट में हम बताए थे उत्पादन के लागत का 1.5 गुना स्तर पर हम ये घोषणा किया है, उसके आधार पर हम एमएसपी देना है ऐसा हम बताए थे। उसका आधार पर 2018-19 में मैंडेटेड खरीफ, रबी और अन्य बागवानी फसलों के लिए एमएसपी ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन का लागत पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ निर्धारित की जाती है सर। वर्ष 2014-15 में ये खाद्यान्नों का खरीदे में 759.44 लाख मीट्रिक टन था। अभी ये बढ़कर सर ये साल लास्ट ईयर में 2022-2023 में 1062.69 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई है सर, जिसमें 1.6 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ हुई है एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड 1.06 lakh crores in 2020-23. It was 1.06 crore in 2014 में था। अभी वो बढ़कर 2.2 लाख करोड़ तक पहुंच गए सर। हर साल ये बढ़ रही है एंड एमएसपी के तहत हम अभी ज्यादा खरीद हो रही है। दलहन तिलहन में हम इसका सीलिंग को निकाल दिया है। 100% हम दलहन को अभी देश में खरीद रहे हैं, इसीलिए हर साल वो खरीद ज्यादा हो रही है एंड उसका मूल्य भी ज्यादा हो रही है। श्रीमती रंजीता कोली। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री साहब से जानना चाहूंगी कि सरकार ने चेहरे को ऑथेंटिकेशन की सुविधा द्वारा KYC शुरू की है। क्या किसानों ने इसका उपयोग किया है? यदि किया है तो क्या स्थिति है? हम स्टेट पर निर्भर थे। स्टेट में किसानों का आकट देना था, वो फिजिकली वेरिफिकेशन करना था, इसी में फर्जी हुआ। उसके बाद हम 13th इंस्टॉलमेंट के बाद हम किए सर आधार लिंक्ड किसान सम्मान योजना देने को हम तय किया है। उसके बाद 15th इंस्टॉलमेंट में अभी हम दिया हुआ इंस्टॉलमेंट में KYC किया है। KYC के तहत वो तो हम फेस आइडेंटिफिकेशन करने का घोषित किया है। इसी में ज्यादा से ज्यादा किसान अभी जुड़े हैं एंड 100% ऑथेंटिकेशन के साथ वो हो रही है सर। एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस, इट्स एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंसी and also it is a example of digital governance in India sir। इसीलिए KYC में अच्छा हो रही है एंड सब किसान इसके साथ जुड़ रही है। ये बहुत इजी है। हमारा मोबाइल ऐप में गूगल डाउनलोड करना एंड डाउनलोड करके हम उसको वो तो प्ले स्टोर में गए तो कोई भी किसान हमारा खेती में रुक के खेती में खड़े होके वो कर सकते हैं। ऐसा एक KYC हमारा सरकार बनाया है। अधीर रंजन चौधरी जी। सर, हम सब जानते हैं कि ये सरकार ने 3 कृषि कानून लाने की उपरांत सारे देश के किसानों ने इकट्ठा होकर
ये किसान विरोधी 3 कानूनों के खिलाफ जो वो बगावत छेड़ी थी। आपका प्रश्न क्या है सर? उसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री जी ये भी कहते कि उनकी तपस्या में कोई गलती हुई थी, तो शायद तपस्या भी ठीक हो गए हैं। तो लेकिन उस समय किसानों ने ये मांग किया था कि एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, लीगल राइट की दर्जा दिया जाए। मैं सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि एमएसपी की लीगल राइट देने में ये सरकार कोई फैसला लिया है? क्योंकि तोमर साहब, आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में रोजाना 35 किसान गरीबी के चलते खुदकुशी भी कर रहे हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं है इस हालत में एमएसपी के लीगल राइट की, एमएसपी और लीगल राइट, इस मुद्दे पे आप जवाब दीजिए। लोगों को भोजन मिल रहा। आज स्वामीनाथन साहब जीवित नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं जब भी एमएसपी की बात होती है तो स्वामीनाथन साहब को याद करना ही चाहिए। वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय कृषि सुधारों की दृष्टि से स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था और उस समय वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पर वो रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। 4 में सरकार बदल गई। 2007 में माननीय मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे और उस समय ये रिकमेंडेशन उनके समक्ष प्रस्तुत की गई। तदुपरांत सरकार ने कृषि मंत्री और बाकी लोगों का एक ग्रुप बनाया रिकमेंडेशन पर विचार करने के लिए, और उस समय स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंडेशन तो 201 की थी, जिनमें एनडीए सरकार 200 पर काम कर रही है, लेकिन प्रमुख रिकमेंडेशन थी एमएसपी की, जिसमें स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करना चाहिए। 2007 के बाद 14 तक यूपीए की गवर्नमेंट रही और यूपीए की गवर्नमेंट के समय इस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया, ये निरसन सूची में डली रही। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उसके बाद इस रिकमेंडेशन पर काम हुआ और आज एमएसपी 50% मुनाफा जोड़कर लागत पर घोषित की जाती है। और जैसा मंत्री जी ने बताया कि अभी तक लगातार प्रोग्रेस है। उस समय 1 लाख करोड़ रुपया खरीद पर खर्च होता था, आज 2,28,000 करोड़ रुपया खरीद पर खर्च होता है। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन की बात की, उस समय जो समिति बनाई गई थी, वो समिति में 3-4 विषय थे, जिसमें प्राकृतिक खेती भी थी, बाकी सुधार भी थे और एमएसपी को और ठीक प्रकार से किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके मैकेनिज्म पर विचार विमर्श करने की बात थी। उस कमेटी की बैठक लगभग 30-35 बैठकें हुई हैं, अभी रिकमेंडेशन नहीं आई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 संजय काका पाटिल। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 27 लाओ श्री कृष्णा जी। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Sir, Andhra Pradesh is going through severe drought. Sir, there is a rainfall deficit ranging from 21% to 51% across different districts of Andhra Pradesh, sir. Specifically, coming to my district of Palnadu, specifically coming to my district of Palnadu and Guntur, there is a drastic reduction in sowing area of chili and cotton, sir. 48% of sowing in cotton has come down, 45% of sowing in chili has come down. Crop insurance should be a major relief for the farmers against erratic rainfall and climate change, sir. Can I ask again?
Sir, Andhra Pradesh is going through severe drought, sir, in 103 mandals. There is a rain deficit, sir. Rainfall deficit of 21% to 51% across the. Sir, again, Andhra Pradesh is not being heard, sir. लगा लो, हेडफोन लगा लो. ओके, बोलो, एक दोबारा बोल लें. Sir, the question is that the chili farms. Can you hear? Can I ask again, sir? Yes, आ रही है आवाज. Andhra Pradesh is going through a severe drought in 103 mandals, sir. There's a rainfall deficit of almost 21% to 55% across different districts of Andhra Pradesh. Specifically coming to my district of Guntur and Palnadu, there is a drastic reduction in sowing area of cotton and chili, sir. It has gone down by 48% in cotton and 45% in chili, sir. Crop insurance should come as a major relief for farmers against erratic rainfall and climate change, sir. So the question to the minister is, chili crop, which comes under the yield based, whereas it is sowed under the irrigated base, but it is classified as yield based under the insurance, sir. So the question for you is whether government is looking that chili crop can be moved from yield based to the irrigated weather based. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है. देश भर में किसानों को एक कवच प्रदान करता है कि किसान के अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो फसल बीमा के माध्यम से वो उसको कवर होता है. और जैसा कि आंध्र प्रदेश के विषय पर आपने पूछा है कि उनको मिर्ची और उसमें वेदर बेस्ड आधार पे करने के लिए, तो मुझे आपसे इसमें ये कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर अभी जिस तरह से किया जा रहा है, तो इसमें राज्य सरकार पूर्ण रूप से फसल बीमा के लिए कौन सी पैटर्न को अपनाना है, जो हमने उनको मॉड्यूल दे रखे हैं, उस मॉड्यूल के आधार पर वो करते हैं. और उसमें राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि कौन से नोटिफिकेशन के अंदर उसको किस तरह से करना है. तो वो राज्य सरकार वहाँ से जिस प्रकार से भी करना चाहे, वो अगर उस मॉड्यूल को अपनाना चाहते हैं जिसमें वो चाहे उसमें वेदर बेस्ड है, तो अगर वेदर बेस्ड पे जाना चाहता है राज्य सरकार उसको निर्धारित कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार इसके अंदर दोनों मॉड्यूल को राज्य सरकार को दे रखा है. Sir, during difficult times like this drought situation, sir, Krishi Vignan Kendras play a major role in encouraging farmers and hand-holding farmers to go for crop insurance in crop diversification, sir. Sir, coming to my constituency of Palnadu, we have proposed a Krishi Vignan Kendra 3 years back, sir, in the village of Jangameshwarapuram in Gurjala Mandal. So 3 years back when we asked, they said, because it's a corona time, we have not been deciding on the Krishi Vignan Kendra, sir. But it's been 3 years, we've been following it up in various offices, sir. But still there is no response to it, sir. So I request the minister to whether there is a policy by the union government to not sanction any KV case, or if they are going to sanction any KV case, or if they are going to do it before the 2024 elections. सब अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये सीधा आपके जो क्वेश्चन से संबंधित विषय था उस पर नहीं है. आगे आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा. श्रीमती असनैन मसूदी जी. बहुत शुक्रिया. जैसा कि आप जानते हैं कि सेब उत्पादन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक रीढ़ की हड्डी की मईशत के लिए रीढ़ की हैसियत रखती है. तो मेरा ये सवाल होगा कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर में सेब की पैदावार कोई 30 मिलियन टन के करीब होती है, क्या उसको PMBY में के दायरे में लाना चाहती है, ताकि कंसेशन रेट्स पर जो प्रीमियम रेट्स हो उस पर ये भी इस जो सेब का जो सन्नत है, तो फ्रूट जो इंडस्ट्री है उसको भी उसके दायरे में लाया जाए. और दूसरी बात है कि
ये उम्मीद है कि सरकार पहले अवेयर होगी कि हेल स्टार्म की वजह से या कहीं कहीं आफाती जो भी सबावत आफी होती है उस वजह से ये फसल में और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बड़ी मुश्किल का सामना है। तो ये एक बड़ा एक होगा, एक अच्छा एक इंसेंटिव होगा वहाँ के फार्मर्स के लिए और एप्पल ग्रोवर्स के लिए, अगर सेब को इसके दायरे में लाया जाए और कंसेशनल जो प्रीमियम रेट्स है उन वो अप्लाई हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहती है हमेशा। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब सेब का अगर भाव कोरोना के समय में कम हुआ था तो उस समय भारत सरकार ने उसकी खरीद की थी, आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसको कवर करने के लिए निर्णय निश्चित रूप से राज्य सरकार लेती है। इसमें राज्य सरकार का पूर्ण अधिकार है राज्य सरकार के अंदर। और मैं यही कह सकता हूं कि भारत सरकार की ओर से इस प्रकार कोई अगर विषय आएगा तो निश्चित रूप से गंभीरता विचार। प्रश्नकाल समाप्त। कल माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल सामने सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय जी। आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करांदलाजे जी। I lay the paper shown at serial number 5 of the revised list of business in the Lok Sabha for today on the table of the House. आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख मद संख्या 6 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 7 श्री अजय कुमार जी। इच्छित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on 4th December 2023 passed the Post Office Bill 2023. Sir, I lay on the table the Post Office Bill 2023 as passed by Rajya Sabha on the 4th of December 2023. Item number 9, Mahasabji ji. Sir, I lay on the table a copy duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the Constitution 128th Amendment Bill 2023 passed by the Houses of Parliament and assented to by the President as the Constitution 106th Amendment Act 2023 since a report was last made to the House on the 19th of September 2023. Item number 10, Shri Nishit Pramaniki. महोदय, आपकी अनुमति से मैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में श्री सुशील कुमार सिंह संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3112 के 8 अगस्त 2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धिकरण में हुए विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। शून्यकाल श्री M.K. राघवन जी। M.K. राघवन, सॉरी प्लीज आपको जी। We wish to draw a grave disparity shown to Kerala. Today only Kerala and another state are not allotted an AIIMS-like institute. The government of Kerala had in advance identified Kinalur in my constituency Kozhikode sufficient land for establishing this prestigious medical institute
I have also repeatedly followed this for the last very many years. Yet, it is a dream come true. Sir, the availability of the AIMS at Calicut, a region which is deprived of advanced specialized medical centers, will be a major boon to the people of 7 districts in the Malabar region of Kerala and some regions of the nearby states like Karnataka and Tamil Nadu. Sir, the district is notorious for frequent Nipah and other virological outbreaks. The entire Malabar region is also prone to various lifestyle diseases including cancer, cardiac, diabetes, respiratory ailments and others. Sir, the setting of the AIMS in Kozhikode will enhance the healthcare as well as research facilities to address common disease apart from helping people get treatment at doorstep. Sir, I strongly request both the Health Minister and Finance Minister to include the setting up of the proposed AIMS for Kerala at Kozhikode in the next budget proposal positively. Thank you, sir. Shri Pradyut Bardoloi ji. I raise my concern and I would like to register my grave concern and urge the relevant departments of the Government of India, especially Ministry of Home and Healthcare and Social Justice Department to take urgent action because there has been proliferation of the drugs use and substance abuses on the rise in this country. So you'll be surprised to know that in the northeastern region, in certain remote areas now, in the states of Manipur, in the states of Arunachal Pradesh and Assam and even Mizoram, so extensive poppy cultivation is expanding. And not only poppy cultivation, but also their processing plants have been set up. Thereby, there have been very rise of the different types of drugs coming to the rest of the country from the valleys of Assam. So, as per the report of NDDTC and AIMS 2019-20, it is reported that over half of the total drug users of India come mainly from 8 states, 4 of which are in the northeast itself: Assam, Manipur, Sikkim and Mizoram. So my state, Assam, is reported to currently have over 4 lakh drug users with 8 vulnerable districts, including in my constituency called Nagaon. So Nagaon has become a conduit district. A large quantity of drugs are every day coming out of through that area to the rest of the country. So my request to the Government of India to take urgent action to stamp these menace, and also, sir, the ministry should put up a rehabilitation center, counseling, and add a new dimension so that the drug abusers can be put at bay and counseling can be done and rehabilitation of the drug users can be taken up, sir. Thank you. Thank you. Shri N.K. Premchandran ji. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. So this is the first time in my parliamentary experience I got the ballot as number 1, but I couldn't make it because of my learned friends. So thank you very much for providing me this opportunity. The matter is pertaining to my constituency, the Greenfield National Highway 744, starting from my constituency, Kadapa to Onam Paripalli to Edaman, Edaman, Aringav, Tenmala and Chengotan to Tirumangalam, that is National Highway 744. Greenfield Highway has been declared by the Government of India, minutes NHAI, but it is quite unfortunate that land acquisition has already been done. 3A notification is there, 3D notification has been completed, but so far the acquisition proceedings are not completed, and thereby the people who have already surrendered the land or people already consented for land acquisition is in big trouble because they are not able to transact any business on the land which has already been under acquisition. What is the problem now is that state government has, once the state government has agreed that they will pay 25% of the total cost of land acquisition will be borne by the state government. That was the assurance given by the state government, but unfortunately the state government has withdrawn from the promise. So, the state government has withdrawn. The state government has withdrawn
the state government has withdrawn from the assurance and they are not ready and willing to pay the 25% of the land acquisition cost. And subsequently, the Government of India, Ministry of Road and Transport, Nitin Gadkari has suggested that if you are not able to pay the 25% of the land acquisition cost, GST exemption may be given for the materials of the construction, and also royalty for the rock blasting has to be given. And the state government and the central government, they had series of discussions, but so far no final decision has been taken. What is the problem is, it is 2 years back, the acquisition proceedings have started and the people are suffering. They are ready and willing to surrender the land. Notification is over. They are not getting the compensation. They are in big difficulty. So my submission to the government of India is 25% of the total cost of land acquisition will come only 250 crores of rupees. Why should you depend and rely on the state government? The total cost of the construction of the road is 2,700 crores. If the government of India is able to bond 2,700 crores of rupees for the national highway, greenfield highway, new highway, why should we rely upon the state government? So my submission to the government of India is, please bear the total cost of the construction of the highway and expedite the steps of the acquisition, complete the acquisition at the earliest, and the compensation be provided to the people belonging to that area, and the proceedings have to be initiated at the earliest of National Highway 744. Thank you very much, sir. Thank you, Chairman, sir. आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। पश्चिम बंगाल के सरकार ने हमेशा अपने जनता को पॉलिटिकल कारणों से वंचित कर रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2020 में एक डिसीजन लिया कि कॉमन सर्विस सेंटर जो केंद्र द्वारा चलाया जाता है उसको बंद कर देने के लिए। अब सोचिए, कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र द्वारा चलाया गया ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से जो साधारण लोग हैं, जो जनता है, उनको तरह तरह के हेल्प मिलता है। जो केंद्रीय जो प्रकल्प है, जो प्रोजेक्ट्स है, उसका हेल्प मिलता है। उसके साथ साथ जो आधार कार्ड का भी हेल्प उनको मिल सकता है वहां से। उनके द्वारा बहुत बहुत काम हो सकता है सीएससी के द्वारा। बंद सिर्फ नहीं किया, इसके कारण 40,000 लोग जो युवा इसके साथ जुड़े हुए थे, जो वहां पे जिनका इनकम होता था, जो सीएससी चलाते थे, उनको जो पंचायत की ऑफिस से वहां से डरा के, गुंडे देकर, धमका के उसको बाहर निकाल दिया गया कि आप यहाँ पे सीएससी नहीं चला सकते, सीएससी आपको बंद करना पड़ेगा। जो ऐसी सरकार, जो सरकार अपनी जनता की नहीं सुनती, जो सरकार अपने जनता को प्रताड़ित करती है, वो सरकार यहाँ पे आके अपने जनता के लिए जो आंसू, जो देखने वाला आंसू बहाते हैं। ऐसा नौबत आ गया कि उन्होंने, सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जो इकोनॉमिक सेंसस है वो नहीं किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। आप बताइए चेयरमैन सर, अगर इकोनॉमिक सेंसस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में कौन आदमी गरीब है, कौन अमीर है? और अगर इकोनॉमिक सेंसस नहीं हुआ तो कहां से लोगों को वो आप प्रोजेक्ट बनाएगा? आपके पास अगर डेटा ही नहीं है तो आप गरीबों के लिए प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? तो इसके ऊपर जनता की डिमांड के कारण हमने कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल भी लगाया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बोला है कि आप इसके ऊपर आपका अपना एफिडेविट दाखिल कीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार डिले कर रहा है, एफिडेविट भी नहीं दाखिल कर पा रहा है और उनको 12 तारीख तक का टाइम दिया गया। अगर विदिन 12 आप अगर एफिडेविट नहीं कर पाए तो आपको 50,000 रुपये का जुर्माना आएगा पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर। तो इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, पश्चिम बंगाल की जनता को हित को ध्यान में रखते हुए रेल स्टेशन और पोस्ट ऑफिस जो है वहां पे सीएससी फिर से चालू किया जाए, तो पश्चिम बंगाल के जनता उस सीएससी का लाभ ले पाए। नहीं तो पश्चिम बंगाल की सरकार पश्चिम बंगाल की जनता को प्रताड़ित कर रही है। जी, थैंक यू सर। सर, दिस इज रिगार्डिंग माय स्टेट ओडिशा। सर, देयर वर 34 गवर्नमेंट एंड 124 private polytechnics, which includes 22 new polytechnics, including one in my parliamentary constituency, Berhampur, under the scheme of submission on polytechnics under coordinated action for skill development, covering all the 30 districts with at least one government polytechnics in Odisha.
Sir, I thanks the Union government for providing central financial assistance for implementation of the schemes, upgradation of existing polytechnics for 11 polytechnics and construction of women's hostel for 13 polytechnics. However, sir, there has been a critical issue before the state, and that is shortage of trained faculty required for these polytechnics. In the Odisha, there is only government polytechnic at Bhubaneswar, which has an extension center, that is National Institute for Technical Teachers Training and Research, Calcutta, under the Ministry of HRD, providing only short-term training, that is without any practical skill training facilities. Odisha doesn't have a board of practical training for which technician and graduate apprenticeship program and graduates are hampering. Sir, through you, I request the Honorable Minister for Education to consider setting up of a technical teachers training institute on the pattern of National Institute for Technical Teachers Training and Research with practical training facilities to enable the Odisha to create a pool of trained teachers of the polytechnics to maintain quality of teaching in government and private polytechnics at Barampur and Odisha, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Shri Om Prakash Bhopal Singh ji. धन्यवाद सभापती महोदय. मी महाराष्ट्रातील अतिशय ज्वलंत विषयाकडे केंद्र सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितोय. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाज आणि धनगर समाज हा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रामध्ये रस्त्यावर उतरलाय. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून जवळपास 100 पेक्षा अधिक युवकांनी स्वतःच्या प्राणाची आहुती हे आरक्षण मिळावं म्हणून त्या ठिकाणी दिलेली. अध्यक्ष महोदय, 15/11/2018 ला गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला 13% नोकरी आणि शिक्षणामध्ये त्या ठिकाणी आरक्षण दिलं गेलं. हे आरक्षण दिल्याच्या नंतर या आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. त्याच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण रद्द करण्याच्या दृष्टीने याचिका दाखल झाली. ही याचिका दाखल झाल्याच्या नंतर 20/9/2020 रोजी याच सार्वभौम सभागृहात मी केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती की तामिळनाडूमध्ये 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याच्या नंतर सुद्धा तिथलं आरक्षण टिकलं होतं. तर केंद्र सरकारनं त्याच पद्धतीने हस्तक्षेप करून ह्या सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयातल्या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करावा आणि हे आरक्षण टिकण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा. पण दुर्दैवानं त्या ठिकाणी तिथं लक्ष दिलं गेलं नाही त्या मागणीकडे आणि 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी या मराठा समाजाच्या आरक्षणाला दुर्दैवानं सुप्रीम कोर्टामध्ये स्थगिती मिळाली. अध्यक्ष महोदय, याच्यानंतर 18/3/2021 आणि 14/12/2022 या 2 वेळेसही हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये न टिकण्यामागचं प्रमुख कारण होतं की आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त ओलांडल्या गेल्यामुळं हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवलं होतं. मी या दोन्ही वेळेस मागणी केली होती की केंद्र सरकारनं आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीनं तशा पद्धतीनं संवैधानिक दुरुस्ती आणून ती आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त वाढवावी. त्याचबरोबर नोव्हेंबर 2023 रोजी सुद्धा खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून सुद्धा प्रायव्हेट मेंबर बिलच्या माध्यमातून सुद्धा ही आरक्षणाची मर्यादा संविधानिक दुरुस्ती करून वाढवावी अशा प्रकारची मागणी मी लोकसभेकडे केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, एवढंच नाही, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या शिष्टमंडळानं महामहिम राष्ट्रपती महोदयांची सुद्धा भेट घेऊन मराठा आणि धनगर समाजाचं आरक्षण मिळण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारनं लक्ष घालावं, आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी यासाठी भेट घेतली. त्यांना सुद्धा एक तशा प्रकारचं निवेदन त्या ठिकाणी दिलं गेलंय. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होतोय. 24 डिसेंबर पर्यंत सरकारनं पहिल्यांदा एक मुदत दिली, राज्य सरकारनं दुसऱ्यांदा एक मुदत दिली. पण दुर्दैवानं जो शब्द दिला तो राज्य सरकारकडून पाळला गेलेला नाही. त्यामुळं याच्या बाबतीत
मराठा समाजामध्ये धनगर समाजामध्ये प्रचंड प्रमाणात त्या ठिकाणी असंतोष आहे. आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे माझी विनंती आहे की आता लोकसभेचं अधिवेशन चालू आहे, तर केंद्र सरकारनं तातडीनं संविधानिक दुरुस्तीचं विधेयक आणून आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त करून मराठा समाजातील युवकांना त्या ठिकाणी न्याय द्यायचं काम करावं, ही मागणी मी आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे करतो. श्री टी.आर. पारिवेंद्र महोदय, मैं एसोसिएट कर रहा हूँ. ओके ओके, सेंड द स्लिप. श्री टी.आर. पारिवेंद्र, यस प्लीज. Thank you, Chairman, for giving me the opportunity 2 मिनट में अपनी बात कहिए, प्लीज. to raise an important issue for a speedy implementation of Women Reservation Bill named Nari Shakti Vandan Abhiyan, which was passed in the Parliament on 20 September 23 during the special session. The said bill has many special features like 1/3 of the seats in Lok Sabha and state assemblies and the legislative assemblies including SC/ST seats. Further, seats reserved for women will be rotated after each delimitation as determined by law made by the Parliament, through which the government made all women more powerful and self-empowered in the decision-making body. In this context, I would like to emphasize that even though the Honorable Union Home Minister has clarified during the discussion on the bill that reservation for women will not be implemented in the upcoming 2024 election. The reservation will be effective after the census conducted after the commencement of the bill has been published. In view of the above, I urge upon the Union Government to take early action to conduct census and to constitute delimitation commission to decide which seat will go to the women after the delimitation exercise. Thank you. श्री विष्णु दयाल राम जी. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 जिला आते हैं, पलामू एवं गढ़वा. ये दोनों जिले आकांक्षी जिलों की सूची में हैं और यहाँ की 80% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है. परंतु दुर्भाग्यवश ये दोनों जिले रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि प्रतिवर्ष यहाँ तो या तो अतिवृष्टि होती है या अनावृष्टि होती है, जिससे फसलें मारी जाती हैं और लोग बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं, पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं. यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा नहीं है, जबकि उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए यहाँ पर सारे तत्व मौजूद हैं. जमीन है, खनिज है, पानी है, बिजली है, वगैरह वगैरह. उद्योग धंधों के नाम पर मात्र एक कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री है जिसका उत्पादन क्षमता बहुत सीमित है और रोजगार देने की क्षमता और भी ज़्यादा सीमित है. ऐसी परिस्थिति में लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और प्रतिवर्ष जब झारखंड से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं तो उनकी लाशें आती है जो बहुत हृदय विदारक उत्पन्न करती हैं. ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से माननीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ पर खाद का कारखाना स्थापित करने की कृपा करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, कृषि की उपज में वृद्धि हो सके और पलायनवाद की भी समस्या समाप्त हो सके. धन्यवाद. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी. Thank you, Speaker, sir, for giving this opportunity. Sir, this is a very serious issue and a long pending issue which is impacting my constituency, Jaipur. Sir, this is about the transfer of EPF past accumulations of employees of erstwhile Built Graphic Paper Products Limited, BGPPL, Unit Seva, which comes under OR/BAM/2910. They are now reporting compliance to
RPFC Barampur being employees of Messrs. Mother Earth Resources Private Limited, MERPL, SEVA, which is ORBM/2468945. Sir, isme the problem is this SEVA unit, which was sold by BGPPL to MERPL in the month of February 2020. But after that, the PF amount, the accumulated PF accumulation, this is under RPFC Kolkata, and they need to transfer it to RPFC Barampur. Sir, this has been, we've been told that all the permissions are now available. The trust is ready with the requisite fund towards the payment of the past accumulation. It is also confirmed the concern that entire fund is generated from accretion of the trust and not from sale of any securities or otherwise. So the retired legal heirs of expired employees have been approaching multiple times, and whenever I go there, they approach me on their pending dues. As the matter is pending for more than a year and a half, this has put the concerned employees towards unexplainable difficulties. So the district administration has also written a letter to the chairman, Central Board of Trustees on 10th April 2023, but there has been no response. We've been following with the Regional Provident Fund Commissioner, EPF of Calcutta. There is no response. KCDPF Trust Calcutta, they have written to RPFC Calcutta to resolve the issue of PF transfer. There is no response. The RPFC Barampur, some fellows from there, they visited Jaipur also. They are saying they're helpless unless until RPFC Calcutta transfers the fund to RPFC Barampur. So, sir, through you, I would like to request the Honorable Minister of Labour and Employment to take up the issue and instruct the transfer of Provident Fund of retired expired employees of Messrs. Mother Earth Resources Private Limited, Jaipur, from the KCT PF Trust Calcutta to RPFC Barampur, Odisha, in the largest interest of employees of MS Mother Earth Resources Private Limited, Jaipur, Koraput, Odisha, sir. Thank you, sir. I would appreciate if the ministry would take this cognizance of the situation and the ground reality and do the thing at the earliest. Thank you, sir. Sir, with a heavy heart, I would like to draw the kind attention of this August House as well as the Minister for Home about the sad plight of people of Tamil Nadu. So the recent flood have battered more than 1 crore people in city of Chennai, districts of Tiruvallur, Kanjipuram, Chengalpet, and Ranipet also. So the situation is very grim, and people are they are inside the home for the past 3 days. From 3rd onwards, there is a continuous torrential rain. And cyclone is it's furious. It has fully dedicated its fury to the people of Tamil Nadu. So it was so heavy and could not bear with it, and people are stranded elsewhere. The trains are halted outside the city of Chennai, and flights are not moving. And more people, thousands and thousands of people are even they could not get the food supplied by the government of Tamil Nadu, and government ministers are going shelter to shelter to help the people, but they could not extend their hands, helping hands to the public because flood waters are in the streets. All the streets are flowing like rivers. So there is a chance to move to the people, sir. CM Tamil Nadu is having day in night. Even today morning, early morning also, he went out to see the people of Chennai, but he could not reach so many people together. So this is sorry state of affairs is prevailing in Tamil Nadu, and Government of India should come forward to help. In fact, yesterday the Home Minister has spoken to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. It is good. And at the same time, State of Tamil Nadu has sent 3 memorandums. Financial memorandums have been sent to the Government of India for an amount of 6,230 crores. But today the CM has asked for 5,000 crores, at least 5,000 crores for a stopgap arrangements. This matter has to be immediately, it has to be considered without fail, and they should extend the helping hand in time. In time means they have to do it
quickly, and central team should be sent to the states, to the districts, wherever the problem arises, and quickly this team should go. Enough team should go so that in one go they should assess the situation, what is the damage occurred, how the more than 8 people have died so far, and we don't know what is the toll as of now. So this is more important issue. Even yesterday, when I have discussed the matter in the BSc, both Parliamentary Affairs Minister and other ministers, they have agreed that it should be given topmost priority. But what is happening, sir? The fag end of the 0 hour, you are allowing me to speak. This is not good, sir. So actually, I thought that this should have a priority over the issues. I don't think that the other issues are not. They are also good issues. But at the same time, priority should be given to the human nature. That is what I am telling, sir. So kindly see that Government of India should come forward. The Home Minister should specifically take care to see that the amount is dispatched quickly, and also along with the men and machineries, so that to help the state of Tamil Nadu quickly, sir. Thank you, sir. You all are supporting the Balaji's argument, sir. It's a valid and legitimate demand, sir. ठीक है बैठिए श्री जयदेव गल्ला जी इसी थैंक यू सर ठीक है आप नाम भेजिए ना प्लीज नाम भेज दीजिए अभी तो बैठिए अभी तो उनको बोलने दीजिए प्लीज सेम सब्जेक्ट आप बैठिए बालू साहब बैठिए प्लीज सेम सब्जेक्ट हाँ about Andhra also we also have problem no cyclone बैठिए तो से आपका विषय निश्चित रूप से सब सहमत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार पहले से भी संज्ञान ले रही है और भी अधिक सक्रिय होकर के संज्ञान लेगी जी सर Thank you, sir. As the honourable member, Mr. T.R. Balu, has mentioned about the cyclone, we also have the same problem in lower coastal Andhra Pradesh. There has been very heavy rain over the last 2 days due to the cyclone over the west central Bay of Bengal of southern AP, sir. The Indian Meteorological Department announced landfall of Mishong today, somewhere between Bapatla and Machilipatnam in lower coastal Andhra Pradesh. Heavy rains have devastated the standing crop in tens of thousands of hectares in coastal and other districts of Andhra Pradesh. This cyclone has brought tears to the farmers as the crop which is ready for harvest is lost before their very eyes, sir. The state government is still in the process of identifying and assessing the damage, and it may take some time to come to the conclusion about the damage to crop, life and property. Due to the heavy rains, roads have been damaged, supply of electricity is disturbed, people are not able to fetch essentials apart from other problems being faced by them. In view of the above, I appeal the Honourable Prime Minister, Shri Modi ji, for immediately sending the central team once the rain recedes for assessing the damage caused to the standing crop, roads, buildings, electricity supply and other infrastructure facilities and submitting its report to the government for release of central assistance. Pending the report of the central team, I request the Honourable Prime Minister and the Honourable Home Minister to release 5,000 crores to Andhra Pradesh as an interim relief immediately to deal with the relief and rehabilitation work due to cyclone Mishong. Thank you very much, sir. Shri Mohan Bhai Kundaria ji. जी मोहन भाई आपका माध्यम से विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सौराष्ट्र क्षेत्र के विद्यार्थियों और उद्योगों के लिए वीजा फैसिलिटी सेंटर अहमदाबाद में होने के कारण 250 से 500 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है। इसलिए राजकोट औद्योगिक सेंटर है, यहाँ एम्स हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसके लिए वीजा फैसिलिटी सेंटर राजकोट में मिलने के लिए आपका माध्यम से मैं मंत्री का ध्यान आकर्षित करना और विनती भी करता हूं। थैंक यू। जरा सा जी श्री एस रामलिंगम जी। मिस्टर लाल जी மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே, don't use these words please. மயிலாடுதுறை okay and nothing is going on the அருகில் மாப்படுகை பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கை. ரயில்வே நிலையத்திலிருந்து சுமார் 100 மீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது இந்த மாப்படுகை சாலை. ஆம்புலன்ஸ்
தீயணைப்பு வண்டிகள் கூட அந்த சாலையில் நேரத்திற்கு சென்று சேர இயலவில்லை. சுமார் அரை மணி நேரம் ஒவ்வொரு புகைவண்டி நிற்கும் போதும் சாலை மூடப்படுகிறது. நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் தேங்கி கிடக்கிறது. இந்த மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தை புனரமைப்பதற்காக 24 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் 6 மாத காலமாக நானும் அமைச்சரை 3 முறை சந்தித்து இந்த கோரிக்கையை வைத்தேன். இன்று வரை எந்த பலனும் ஏற்படவில்லை. என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதி வளர்ச்சி நிதியிலிருந்து அந்த சாலையை ஒட்டி உடனடியாக எஸ்கலேட்டர் அமைப்பதற்காக 3.25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி கொடுத்தும் பணி துவங்கப்படவில்லை. Please stop. Right now the arrangement of translation is not here. आपको मैं बाद में बुलाऊंगा. I will call you later. Now please you sit down. I will call you later. Please. हो जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है. नोटिस थोड़ा देर में आया. We will. Yes. Please cooperate. You all know the issues and the problems and what is the system. Shri V.K. Shri Kandan ji. Respected Chairman ji, Bharat Earth Movers Limited is a profit-making company with orders worth more than rupees 10,000 crore one through mostly global tenders. The company had made a profit of rupees 278 crore in 2022-2023 and the government so far got rupees 400 crore in the form of dividends. A unit of BEML at Kanjikot in my parliamentary constituency has already delivered 1,500 heavy military trucks, 300 railway coaches and 500 metro bogies. The government had to abandon a move of disinvestment in BEML in 2016 due to stiff opposition. The privatization move again is not in the interest of our nation's security. Therefore, I urge upon the government not to privatize BEML and withdraw such a move immediately. Thank you, sir. Shri Raghuram Krishna Raju ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. This is regarding the Independence Gram Swaraj, which is initiated by Mahatma Gandhi, and later on the government followed, and in the government of Narendra Modi ji, lot of priority has been given to all the Gram Panchayats and lot of funds are also being released. In this case, last year to the government of Andhra Pradesh, 569 crores got released to the Gram Panchayats, but not even a single penny has come to the accounts of the Gram Panchayats, which was given under 15th Finance Commission. And in the 14th Finance Commission, starting from 2019 to 2023, around 8,629 crores got released, but nothing has been credited to the accounts. We all have met the Sarpanchas Association of Andhra Pradesh, where all party members are there, predominantly dominated by my present party. We all have met Honorable Minister Giriraj Singh ji and given a representation. He is kind enough to give a note to the state government to give back the money within 10 days. But in the last 3 months also, nothing has happened. Now, with this, the villages are greatly suffering, and the dream of the Honorable Government of India, led by Narendra Modi ji, is not getting honored. So I once again request Honorable Minister Giriraj Singh ji, who was here till now, I had already briefed him this morning also, through the Honorable Chairman, sir, to take it up immediately on priority. And one more minute, sir, just one more minute, I'll finish. And there has been a new system known as volunteer system, which has totally replaced the Sarpanchas and the ward member system, wherein totally dysfunctional. The village system has got totally dysfunctional. I request the Honorable Member Panchayati Raj, as far as the village
development is concerned, it should be left with only the panchayat, sarpanch and the ward members, not with the volunteers. Thank you, sir. Okay. Dr. Dhar Singh Bisen ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान युग डिजिटल का है और इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नेटवर्क की आवश्यकता होती है, और जैसा कि आपको विदित है अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान में सारे काम ऑनलाइन होते हैं, चाहे वो ऑफिस के काम हो, किसानों के काम हो, पढ़ाई लिखाई के काम हो, चाहे विभागीय सारे काम हो, इन सब के लिए चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम हो, सभी काम के लिए ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो तो भारत जो है एक डिजिटल लेन देन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, और डिजिटल लेन देन हो या कार्यालय कार्य इन सब के लिए मोबाइल नेटवर्क अति आवश्यक है अध्यक्ष महोदय। किंतु आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क सब जगह ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है, और जिसके कारण से इन सारे विभागीय छात्र छात्राओं और अनेक सारे कामों के लिए नेटवर्क की उपलब्धता ठीक से नहीं होने के कारण, नेट ठीक नहीं चलने के कारण सारे काम प्रभावित होते हैं, और विशेष करके बीएसएनएल का और बीएसएनएल का जाल लगभग उसके अलावा पूरे प्रदेश में नहीं सारे देश में बीएसएनएल एक अपने नाम के लिए जाना जाता है। पर सभापति महोदय अभी भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2G सेवाओं से आगे बीएसएनएल नहीं बढ़ पाया है, जबकि अन्य जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं वो 3G, 4G और 5G तक चली गई हैं, और जिसके कारण से स्पीड में नेटवर्क नहीं मिलने के कारण से सारे लोग परेशान हैं, छात्र छात्राएं परेशान हैं, जो गांव में काम करने वाले पढ़ने वाले छात्र हैं वो परेशान हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में भी बीएसएनएल की सेवाएं और सुदृढ़ हो, अच्छी हो, और इसके अलावा अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाएं उनका भी नेटवर्क अच्छा चले, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सारे ऑफिसर्स को काम करने में अच्छी सुविधा मिल सके। आपने समय दिया सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अनुराधा चिंता जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, people living near oil and gas drilling sites in Andhra Pradesh, East Godavari districts face the risk of being exposed to oil or natural gas leakages from the plants located in the vicinity, especially in the Dr. B.R. Ambedkar Koresava district, which has been witness to such incidents in the past. According to reports, GAIL operates pipelines extending to a length of 430 kilometers. ONGC operates 120 kilometers of pipelines, and Reliance operates a 36-kilometer pipeline in the Konesima region. Though the officials of said companies have been asked to replace old pipelines in the region to ensure the safety and safety of the local communities and prevent mishaps and prevent frequent gas leakages from the existing pipelines, there is an immediate need to establish a crisis management facility in the district, considering the operations of numerous oil and natural gas producing companies in the said region to effectively handle emergencies of crisis. I would therefore request to the government to take immediate steps to include a comprehensive risk assessment for the oil and natural gas operations in Konesima district and ensure the establishment of a crisis management facility at the earliest. Thank you. Dr. Sanjeev Kumar Shingri ji. Thank you, Honorable Chairperson, for giving me this opportunity to speak on railway issues of Kurnool Parliamentary Constituency. Sir, Kurnool Parliamentary Constituency, which I represent, deserves additional railway facilities in view of its overall backwardness. Andhra Pradesh has 3 regions with diverse culture and dialect. Rayalaseema region is one of them, and Kurnool is the gateway of Rayalaseema. Kurnool, the erstwhile capital of Andhra state, is a backward district in all respects. Demographic indicators stand testimony to this fact. Kurnool was capital of Andhra state from 1953 to 56, and the capital was shifted from Kurnool to Hyderabad when states were reorganized on linguistic basis. There is a strong feeling in Kurnool region that a serious historical mistake was done when the capital was surrendered in favor of Hyderabad. The region was neglected for 7 decades by successive governments. This injustice should be relieved. Kurnool region is very backward as per the report of Sivaramam Krishnan Committee, an expert committee which was constituted under Section 6 of the AP Reorganization Act 2014. Kurnool region has challenges of high dependency ratio of 55%, low literacy rate of 65%, low urbanization of 29%, and has a young
growing workforce. These problems need to be addressed with a humane touch, sir, and every investment in public utility cannot be seen from a commercial angle. Following the principles of natural justice, all regions of India should be developed equally. All of us should agree that injustice was meted out to Andhra Pradesh with unfair state bifurcation. We need a helping hand from the union government. Sir, economic growth, employment, income generation, and equitable distribution of growth are essential for all regions of Andhra Pradesh. It is distressing to note that domicile migration, that is distress migration from this area, is in lakhs every year. Nearly 3 lakh people migrate to different areas from Kurnool parliamentary constituency. The area has problems of water supply, though Tungabhadra River traverses 95 kilometers in Kurnool district. Only 60% of cultivable land receives water supply. People hardly cultivate one crop per year. So people travel hundreds of kilometers in search of job. People are asking for a better connectivity with cities like Visakhapatnam and Vijayawada, which are the 2 cities of Andhra Pradesh. National highway connecting Kurnool and Vijayawada, which traverses through reserve forest, needs upgradation. Road journey is tedious, and there is no express train connecting between Kurnool and Vijayawada and Visakhapatnam. So at least a good railway connectivity is needed for this region. We are not asking for a new railway track. We are just asking for a train service on the existing railway tracks. As a representative of 22 lakh population of Kurnool region, I have been requesting the railway authorities for some facilities like train halts at Madhikera, Kosigi and Adoni, direct train service from Kurnool to Mumbai in favor of thousands of North Indian families doing business in Kurnool, and speeding up of construction of railway rehabilitation workshop at Kurnool. Sir, I made nearly 15 representations to Railway Ministry in past 4 years. Response is not encouraging. I take this opportunity to request the Honorable Minister of Railways to please start a daily train service from Kurnool to Visakhapatnam via Vijayawada. A tri-weekly train with number 07237 was running on ad hoc basis, but that too was withdrawn recently for reasons better known to the officials. Thank you. Thank you. Sir, passenger services cannot be viewed in commercial angle. Occupancy of the service was good enough and would have improved further had it been a daily service. Sir, to conclude, I request the Minister of Railways to restart the train on daily basis, and I hope this facility can bring solace to the injured hearts of people who feel that many historical blunders were committed against the region. There should be equitable development of all regions of the country. Thank you, Chairman, sir. Give me opportunity to raise very urgent and public importance matter which is related to my parliamentary constituency. Sir, the flight and agony of cashew workers who are workers in Kollam and Alappuzha in Kerala who are striking for want of renewed wages and decent benefits from their occasion is a grim and unfortunate picture of the crisis engulfing the cashew sector in Kerala, which is livelihood of more than 3.5 lakh workers, a majority of them being women from backward communities. The minimum wages of cashew workers are not revised even after 10 years since then Ummanchandi government, which was the last government to have increased the wages of cashew workers. The present state government under Chief Minister Pinarayi Vijayan has ignored the plight of cashew workers and their wages is not revised. The present wages are even lower than wages of Manrega workers. The strike of cashew workers, including in my parliamentary constituency, various cashew factories like Karimulakal, Moornad and adjacent constituency, Kayangulam and also Adinad, Kollam. So all factories come under Cashew Development Corporation. Demanding rise the minimum wages is not limited to Kollam district alone, but also these cashew workers are striking not only in Kollam district, other districts also. My Kalapi, Pathanamthitta, Thiruvananthapuram district also facing this crisis. So, but sir, the benefits of cashew workers, including ESI and PF benefit, also not getting properly because the ESI benefit is denied cashew workers because of the thin attendance, the working hours and also working days also. Working days also not properly. That's why ESI benefit also and also PF benefit also not getting for cashew workers. So I am coming, sir. Sir, the women cashew workers earn
500 rupees per day. Now workers are getting 35 for shelling 1 kg of raw cashew and 45 for peeling the kernel. The merged sum they get on in a while does not even cover their food expense or medical emergencies. Many women's cashew workers are now working as household help and do other sundry jobs sustain themselves. Sir, there was a time when more than 780 licensed cashew factories function in Kerala, which has now reduced less than 800 cashew factories. Please. Sir, I am coming, very important, I am coming, sir. Sir, the 1980s and 1990s, cashew has peaked 125,000 metric tons, which has sealed down to less than 20,000 tons. This situation indicates alarming crisis of entire industry. Banks have wound up numerous cashew factories and more than 10 cashew factory owners. More than 10 cashew factory owners whom small-sized factories own have committed suicide in Kerala. Therefore, the plight of the cashew workers must be addressed by declaring special package for welfare of cashew workers with the umbrella welfare option, including ex gratia, financial support during the period of. Sir, I complete. आप अधिक समय लेंगे तो किसी अन्य मान्य सदस्य का अवसर समाप्त होगा. 1 minute, sir. Last point. Please conclude immediately. Last point. Sir, financial support during the period of unemployment, free medical treatment, and ESI hospital soft loans. The cashew workers must be given their fair share outstanding. Come to the outstanding. Yeah, I am coming to point, sir. So, outstanding bonds and other benefits of denied them due to winding down cashew factory, additional benefits, loan waivers, medical facility, all cashew workers, irrespective of the last status of employment and premium payment. With these words, sir, so very serious matter and also the. धन्यवाद जी सभापति महोदय. धन्यवाद सभापति महोदय. कि 0 आवर की समय की मर्यादा का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए. थोड़ा बहुत 10-15 सेकंड चल सकता है, बट नॉट मिनट्स. प्लीज जी. धन्यवाद सभापति महोदय, आपका जोहार. मेरे लोकसभा रांची जो हटिया विधानसभा के नगरी नामक स्थान है, जहां से स्वर्ण रेखा पवित्र नदी निकलती है, जो रांची शहर होकर गुजरते हुए जमशेदपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है. 474 किलोमीटर लंबी इस नदी, जो झारखंड की लाइफलाइन कही जाती है, रांची की लाइफलाइन कही जाती है. झारखंड की प्राचीन संस्कृति में इस नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है. रांची में चुटिया नामक स्थान में स्वर्णरेखा नदी एक सहायक नदी हरमू से में आकर मिलती है. इस संगम पर करीब 500 वर्ष पुराने नागवंशी कालीन 21 शिवलिंग नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण है. कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी चुटिया होती थी और वह सांस्कृतिक अवशेष जीवंत धनाढ्य संस्कृति की कहानी कहता था. किंतु अफसोस यह है कि झारखंड की जेएमएम एंड कांग्रेस की सरकार की अनदेखी के कारण, उदासीनता के कारण, गैर योजना से तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण यह नदी एक हरमू में मिलती है, वो नदी क्या नाले में तब्दील हो चुकी है. नदियों के किनारे अतिक्रमण, शहर का सीवरेज जो सिस्टम, उसका पानी और स्वर्णरेखा नदी में गिरता है. दिल्ली की यमुना नदी से भी स्थिति उस स्वर्णरेखा नदी की खराब हो गई है. इन दोनों नदियों के संगम तल के स्थल पर स्वर्णरेखा बिल्कुल काली पड़ती हुई जा रही है. आज से लगभग 10-15 साल पहले पूर्व से हजारों की संख्या में छठ व्रती वहां अर्घ देने जाते थे. महोदय सभापति महोदय, बहुत अहम विषय है मेरे राज्य सारे विषय अहम होते हैं. मैं भी वहां सावन के महीनों कांवर लेके उस स्वर्णरेखा के नदी के तट से पानी लेकर पहाड़ी मंदिर पर बाबा का अभिषेक करने जाते थे. वहां अनेक तरह के मेले, आप कृपा करके नरेंद्र नारायण भोजन आप चाहते हैं ये बताइए. हर एक घर से एक मुट्ठी चावल और दाल लेकर प्रसाद बनाया जाता था. लेकिन नदी के प्रदूषण होने कारण लोगों ने इस नदी से खुद को दूर कर लिया. अब छठ और कार्तिक पूर्णिमा दोनों में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई.
नदी के चट्टानों में उसकी आप जो कृपया शिवलिंग करके है मांग रखिए। वो तेजी से क्षरण हो रहे हैं। मेरी यह डिमांड है कि दीर्घकालीन योजना बनाकर इस स्वर्णरेखा नदी जो पवित्र नदी इसको बचाया जाए, क्योंकि वहां की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। यह श्री नदी कुलदीप राय शर्मा सांस्कृतिक जी। धरोहर है, उसको कैसे हम सब बचाएं, कुलदीप इस राय पर शर्मा जी। आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। श्री एस रामलिंगम जी। மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே, மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தில் சுமார் 100 மீட்டர் தொலைவில் மாப்படுகை நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது. இதில் மேம்பாலம் இல்லாத காரணத்தினால் அவசர காலத்தில் ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனங்கள் கூட செல்ல முடியாத நிலை. எனவே இந்த லெவல் கிராசிங் நம்பர் 229 இதில் உடனடியாக மேம்பாலம் கட்டப்பட வேண்டும். கடந்த 24/11/23 அன்று பொதுமக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் கூடி சாலை மறியல் செய்தார்கள். அப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் தலையிட்டு விரைவில் இதற்கான பரிந்துரையை நான் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார். இருந்தும் கூட இதுவரை எந்த பணியும் துவங்கப்படவில்லை. இந்த ரயில்வே தடத்தில் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் 1/2 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை தேங்கி கிடக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இதே மயிலாடுதுறை புகைவண்டி தடத்தில் இரட்டை வழிப்பாதை விழுப்புரம் வரை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று பலமுறை வற்புறுத்தி இருக்கிறேன். இதுவரை செய்யப்படவில்லை. மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தில் எஸ்கலேட்டர் அமைப்பதற்காக முதல் பிளாட்பாரத்திலிருந்து 3வது பிளாட்பாரம் செல்ல முடியாத நிலையில் என்னுடைய தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து 3.25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தோம். புகைவண்டி துறையில் இதுவரை அதற்கான பணிகள் துவங்கப்படவில்லை. மேலும் 24 கோடி ரூபாயில் புனரமைக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். 2 வருட காலமாகிறது. எந்த பணியும் இதுவரை துவங்கப்படவில்லை. நான் இப்போது கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் மிக மிக அவசரமான ஒன்று. இந்த மேம்பாலம் லெவல் கிராசிங் 229 இந்த மேம்பாலம் அமைந்தால்தான் அந்த பகுதியில் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களை இணைப்பதற்கான வழிவகை ஏற்படும். எனவே உடனடியாக இந்த மேம்பாலத்தை அமைத்து தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री अधीर रंजन जी। Sir, I would like to flag the attention of this government that it is alarming to note that there is no respite of ethnic conflict and violence in the state of Manipur. Sir, it is paradoxical to note that on the one hand, both the central government and state governments are glibly claiming the peace and normalcy being restored in the state of Manipur. But on the other hand, the grave situation itself which is prevailing over there is an eloquent testimony of the abysmal failure of the state government of West Bengal, state government of Manipur. So the issue has come to such a pass that even day before yesterday, 13 deaths have been reported in the newspaper. But the issue is that the government has been found totally impervious to the intensity of the violence, to the sensitivity of the northeastern state, as if nothing is happening over there. So the government of Manipur has been totally failed to maintain the law and order situation in Manipur, and the situation has been right to discharge. एक मिनट में अपनी बात कहिए। The situation has been right. Sir, situation has been right to impose presidential rule. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज भारत सरकार के एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना हर घर जल योजना के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मानवर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके आस में गांव के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में हर घर जल योजना के कार्य करने वाली एजेंसियां मनमाने तरीके से गुणवत्ता विपरीत कार्य करके धन का अपव्यय कर रही हैं। इस तरह के
समय से परियोजना पूरे न होने से संशय प्रतीत होता है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा गांव ग्रामीण की सड़कों के किनारे लेने वाली एजेंसियों ने सबलेट कर स्थानीय लोगों को काम दे दिया गया है। उन्होंने स्वयं भी सबलेट कर दूसरे लोगों को काम देकर गांवों की गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए बनी हुई सड़कों के किनारे गांव की इंटरलॉकिंग। शुक्रिया स्पीकर साहब, तुसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाउण दा मौका दिता। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ बनामुखी अमृतसर तो लालकुआं जयनगर अजमेर ते टाटा नगर माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री को ध्यान आकर्षित करता हूं कि जो सड़कें गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में टूट गई हैं, ऐसी कार्यदायी संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई की जाए। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, अगले वक्ता के नाम में बोल दूंगा सर जी। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, रेल विभाग वालों अमृतसर तो चलने वाली ट्रेन जड़ियां ने वो अमृतसर तो बनामुखी लालकुआं जयनगर अजमेर टाटा नगर नंगल डेरा बाबा नानक पठानकोट ते चंडीगढ़ बंद कर दी गई ने। धुंध का बहाना लाया 1 दसंबर तो लैके 29 जनवरी तक 2 महीने ट्रेन बंद ने। धुंध सिर्फ 15 दिन पैंदी है। पठानकोट डेरा बाबा नानक पट्टी ते ਜਿਹੜੀ खासकर चंडीगढ़ में चलने वाली ट्रेन हज़ारां लोग ਜਿਹੜੇ ने चंडीगढ़ राजधानी है हाईकोर्ट है, हज़ारां लोग उत्ते सफर करते हैं। 2 महीने लोग किवें जाणगे? किसान अपनी फसल लैके अमृतसर दे विच किवें आएगा? मजदूर जिहड़ा है वो अपनी मजदूरी वास्ते अमृतसर तक किवें पहुंच करेगा ते मजदूरी करन तो बाद घर किवें पहुंचेगा? वीरेंद्र जी, आप लंबी बात बोलने लग गए हैं। बैठो तो बोले जी, अरे बोलिए सर। मेरी सरकार तो दरखास्त है कि 1 दसंबर तो 29 फरवरी तक जी ट्रेन बंद की ने उन्होंने बहाल किया जाए ताकि लोग वीरेंद्र जी सुखी रहन। श्री वीरेंद्र। सभापति महोदय, मैं भारत की संसद को और यहाँ बैठे हुए सभी सांसदों को और देश में यहाँ अनुपस्थित सांसदों को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए, जैसे विश्वकर्मा योजना है, किसान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके लिए मैं अपने लोकसभा क्षेत्र बलिया में एक कार्यक्रम लोक संवाद का चला रहा हूं, गांव सभा से लोकसभा तक। उसमें सारे संबंधित अधिकारी उपस्थित रहते हैं, डीएम, सीडीओ और सभी संबंधित अधिकारी और सारे विभाग के अपने सरकार की योजनाओं को लाभार्थी बनाते हैं। गांव सभा का सदस्य जो कभी पूछा नहीं जाता था, उस संसद के लोक संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। और मैं निवेदन करता हूं कि पहले इसको लाभार्थी बनाओ, फिर 5 लोगों को ये लाभार्थी बनाएगा। मैं वहां के, हमारा लोकसभा क्षेत्र बलिया 2 जिलों में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर। मैं वहां के डीएम, गाजीपुर के डीएम और बलिया के डीएम और सीडीओ, दोनों जिला के सीडीओ को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सारे संबंधित अधिकारियों को बुलाकर लाभार्थी वहीं बनाते हैं और उनको 5 लोगों को लाभार्थी बनाने का मैं निवेदन करते हैं। आपकी तो आप चाहते क्या है? आपकी क्या डिमांड है? लोकसभा आपकी मांग क्या है? गांव सभा से लोकसभा तक का कार्यक्रम, भारतीय लोकतंत्र को भी गांव सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
Hello and a very warm welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host Kriti Mishra. India's criminal justice system is set for a complete overhaul. The government has introduced 3 key bills to replace colonial era courts with the objective of speeding up trials by laying down specific timelines, boosting rates of conviction by improving the quality of evidence and providing relief and protection to victims. So what are the key provisions in the bill? What are the major recommendations of the Parliamentary Committee on Home Affairs? Well, we've packed everything for you in this edition, so come along. India's criminal justice system has been predominantly shaped by laws and regulations inherited from the British colonial era. In the post-independence years, these legal foundations underwent alterations and amendments to align with the evolving requirements of modern times. The experience of 7 decades of Indian democracy calls for comprehensive review of our criminal laws, including the Code of Criminal Procedure, and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people of India. The pre-independence criminal laws were used by the British to protect their colonial interests, to rule the people and the country, and to maintain their authority and supremacy over India. There was a need for comprehensive review of the criminal laws, the Criminal Procedure Code, the Indian Penal Code, and the Indian Evidence Act, and adapt them according to the present-day needs and aspirations. In fact, Prime Minister of India also advocated for the need to revamp all the legislations enacted across all departments during the British era. देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। In accordance with the basic principles enshrined in the Constitution of India, it was proposed to bring about fundamental comprehensive changes in the framework of Indian criminal laws. With this objective in view, the existing Indian Penal Code of 1860, the Code of Criminal Procedure 1973, and the Indian Evidence Act 1872 would now be repealed and replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and the Bharatiya Sakshi Bill 2023 respectively. The Home Affairs Minister introduced these 3 key bills in the Lok Sabha on 11th of August 2023. ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा. The main problems in present legal system are very complex. There's huge pendency of cases in the courts. There's low conviction rate, and the amount of fine prescribed in laws is very less, from 10 rupees to 500. There's overcrowding of under-trial prisoners in prisons. There's very little use of modern technology in the legal system. And there's delay in investigation, pending hearing process, and delayed justice due to inadequate use of forensic evidence. The new bills seek to historically address the problems in the criminal justice system to strengthen law and order, simplify legal procedure, provide speedy justice, and adapt the criminal justice system with the technological advancements. Further, all the outdated references have been deleted in the proposed bills. These bills seek to create a legal structure which is citizen-centric and to secure life and liberty of citizens and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 repeals the Indian Penal Code 1860. Key changes proposed in the bill include sedition. IPC defines sedition as bringing or attempting to bring hatred or contempt or exciting disaffection towards the government. It is punishable with imprisonment term between 3 years and life imprisonment and or a fine. The bill removes this offence. It instead penalizes the following: exciting or attempting to excite secession, armed rebellion, or subversive activities, encouraging,
feelings of separatist activities, or endangering sovereignty or unity and integrity of India. These offences may involve exchange of words or signs, electronic communication or use of financial means. These will be punishable with imprisonment of up to 7 years of life imprisonment and a fine. Terrorism. The bill defines terrorism as an act that intends to threaten the unity, integrity and security of the country, to intimidate the general public or disturb public order. The bill also penalizes conspiring, organizing or assisting in preparation of any terrorist act within an imprisonment term between 5 years and life imprisonment and a fine of at least 5 lakh rupees. Petty organized crime. The bill makes attempting or committing petty organized crime punishable with imprisonment between 1 and 7 years and a fine. Death penalty for gang rape of minor. IPC allows death penalty for gang rape of women below 12 years of age. The bill now allows death penalty for gang rape of women below 18 years of age. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Code of Criminal Procedure 1973. The code provides for procedure for arrest, prosecution and bail for offences under various acts including the Indian Penal Code of 1860. The highlights of this bill are trials in electronic mode. The bill provides that all trials, inquiries and proceedings may be held in electronic mode. It also provides for the production of electronic communication devices likely to contain digital evidence for investigation, inquiry or trial. Electronic communication includes communication through devices such as mobiles, computers or telephone. Forensic investigation. The bill mandates forensic investigation for offences punishable with at least 7 years of imprisonment. Timelines for procedures. The bill prescribes timelines for various procedures. For instance, it requires medical practitioners who examine rape victims to submit their reports to the investigating officer within 7 days. Trial in absence of offender. The bill provides for conduct of trial and pronouncement of judgment in the absence of a proclaimed offender. This shall be done when such a person has absconded to evade trial and there is no immediate prospect of arresting him. The Bharatiya Sakshi Bill 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Indian Evidence Act of 1872. The Act provides rules for the admissibility of evidence in legal proceedings. The highlights of Bharatiya Sakshi Bill are admissibility of electronic or digital records as evidence. The bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as paper records. It expands electronic records to include information stored in semiconductor memory or any communication devices like smartphones or laptops. Oral evidence. Under the Act, oral evidence includes statements made before courts by witness in relation to fact under inquiry. The bill adds any information given electronically to be considered as oral evidence. Secondary evidence. The bill expands secondary evidence to include oral and written admissions and the testimony of a person who has examined the document and is skilled in the examination of documents. दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता इस देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा, वो वैध नहीं होगा। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आजादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया। The need to reform and rationalize the Code of Criminal Procedure, as also the need to undertake a comprehensive review of the criminal justice system of India, has been expressed
from several quarters from time to time. The Law Commission of India, in its various reports, has recommended several amendments in the criminal laws of the country. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar referred these 3 bills to the department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on 18th August 2023 for submitting its report within 3 months. The committee, during its deliberations, held a total of 12 meetings spanning more than 45 hours. 19 domain experts were called before the committee to present their views on the bills. The experts invited to participate in the deliberations included senior advocates practicing in the Supreme Court and various high courts, renowned university professors, retired judges, Chairman of Law Commission of India, retired Director General of Police, and besides, the representations received from private individuals and organizations and members of Parliament and ex-members of Parliament were also examined by the committee. Some of the major observations and recommendations of the committee include: the text of all 3 bills is in English language and hence the proposed legislations are not in violation of provisions of Article 348 of Constitution. The Samachar has widened the scope of definition of gender by including transgenders. For the first time, community service has been introduced as a punishment in Samachar for petty offences. The committee appreciates the government for introducing death penalty as a punishment for the offence of gang rape on a woman below 18 years of age, which was not provided in the IPC. The committee has recommended the government to seek the opinion of Attorney General and Solicitor General of the country with regard to clause 1012, which is apparently about mob lynching. The committee appreciates the government for enhancing the punishment under clause 104 on causing deaths by negligence from 2 years to 7 years. However, the committee has recommended reducing this punishment to 5 years as the proposed punishment of 7 years is unreasonably long. The committee commends the addition of Offence of Terrorist Act in the Samachar. The committee compliments the government in deleting the term sedition from criminal law by rephrasing it without compromising the security of the state. The committee has recommended the government to include Section 377 of IPC in the Samachar.